Okay, Namaskar, Sani. Hello, Namaskar. This time we don't have a separate revision lesson, so we'll start with the prayer. Let's all say it. Om Namami Tvam Sharada Devim Mahabhagim Bhagavatim Kashmir Purvasinim Vidyadayinim Rakshamam Namami Tvam. Then there is Lalvak. Amipanasatras Navichas Laman Katiboizidaimion Mitiditar Amiantaken Poin Zanshaman Zuchumbraman Gargatsah. Now this is a very good vak from Laleshwari. At the same time, it's a good exercise for you also who are learning to read and write Kashmiri to read this along with us. So now here it says that in lesson 1, we learned the use of a or a and a. In lesson 2, we also learned a, u. And then in lesson 3, we learned e and o, short e, short e and short o, which is e and o. I guess you guys have done your homeworks, and then in this lesson we are mostly doing revision. So Karuna ma'am will also be doing, I'll do this one page and then I will see how we go further because it's mostly revision. So I would like to ask the participants of this lesson to read these words so that we get a good exercise. So let's start with Agastya. Agastya, can you read the first 3 words of a? Okay, Agastya, first tell me what is the guide word for this? Pardon? What is the guide word for this? I'm not sure. I don't remember the guide word. Okay, can anyone help Agastya with the guide word? You remember the word uch? Yeah. Yeah, that's uch. And girl, what do we mean by uch? What is the meaning of the word uch? Is it I? I, right. Okay, let's move on. Can you start reading these words? 3 of them. Earlish, Kurtij, and Tamiz. Can you read it again? Tamiz. 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 Yeah. Are you reading in Roman? Yeah, I'm reading it in Roman. Can you see that the line on I, it is slanting from left to right? So when it is from left to right, it's supposed to be a long one, tamiz. Oh, okay. Like in Katish, when you read Katish, in that word on top of I, you see the slanting line is from right to left. So you read it as short, Katij. Oh, okay. Here you see the difference, right? Okay. So would the last one be the leel? The leel? Or the leel? Yeah, a long E. I, okay. the leel. Oh, okay. Okay. Thanks. Let's go to Anika. Can you read the rest of the 3 in this line? Hat, Nyat, and Dalil. Dalil. The first one is, can you read it again? Hat. Hut. Hut. Yeah. The same way as a lish. A lish, the first word in this line. Yeah. Katij. So the same way. Hut. Hut. Okay. Let's move on to the next one. Who can tell me the guide word for this?
A and 2 dots on top. Come on, guys. This is lesson 4. Merge. Merge. Correct. Who said that? Sweekriti. Okay, good. And what does merge mean? Mother. It takes a long time. Answer should come very quickly. Okay. Anika, can you read first 3 words of this line with the guide word merge? Earth, pencil, pencil, jet, The second one is, can you read it again a bit clearly? pencil, Yeah, you don't have to actually say N there clearly. It's P. It's a sound with a slight sound of N. Pers. It's not pers, it's pers. Like we say in Hindi, paise, it's pers. It means the same, like pers in Hindi, money. This is J. D has an I superscript, so it has a mixed sound of D and Y. Judge. Okay. Now let's move on to the next 3. Manya. Praj, Nar, and Her. Her. Very good. Very good. Best. I guess you're reading the meanings also along with it. Try to remember the meanings also. Okay, let's go to the next one. You with a hat on top. What is the guide word? Who will tell me the guide word? Sweekriti, can you tell me the guide word for this? B. B. And what is the meaning of B? Me or I. Yeah, that's right. Can you read the first 3 words in this line? Tur. Makut. Tur, Tur. Makutsu. Kutsun. Kutsun. Karu. Yeah. That's fine. That's fine. Just 3 words. When you say makut, it's read together. It's not read separately. Makut. You don't read it like that. You read it makuts. Can you read it again? Makut. Yeah, makuts. And the next one is Kutsun. putsun. Putsun. Correct. Okay, let's go to the next 3. Manya. Karuts, Karuts. Karuts, Sun, and Drak. Druk. Druk. Drak. Druk. 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 Drak. And this is the middle one is tsun. 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 Sun. Correct. Let's go to the next one. U with 2 dots on top. The Anika, can you tell me the guide word for this? I'm not sure. Okay. The guide word for this is, can anyone quickly help her with the guide word? Is it Dhar? Correct. Agastya is quite active today. I like it. Tur is the guide word for this. And can you start reading the first 3 words of this? 24, Tunt. It's T and I together. Tunt. tent, Core. core, Core. this, and this, Juice. Do's. this. The guide word is tur, so you have to read it in that way. Tur, tunt, do's. And then after do's,
Fruits. Fruit. Fruits. You have to say it a bit longer. Fruits. You can't shorten it. It's a bit longer. Fruits. The sound under which you have these two half moons, or the sound on which you have two dots, that sound gets extended a little bit. Fruits. Okay. Just read the rest of the two as well. Earthen. Goods. Tim. When you have th and a dot underneath, it is th, the sound of th. Tim. Earthen. Goods. Yeah. Goods. Okay, very good. Let's go to the next one. Who is left? Agastya. First, you tell me the guide word for this. Is it re? Re, Re. Re. not re. रह गया वो वाला रह नहीं है ये. Re, it is a. Oh, okay. Re. Re, correct. Re. Okay. So, re. And the first word is re as well. So go to the second one. He. He, And he. he. Oh. And can. Ke, not can. It's ke. N and H together. Ke. Ke. Yeah. Okay, you read rest of them as well. Yeah. Benny. Benny, correct. Benny. Beye. Peye. Yeah, Beye. And Keye. correct. Then the last one in this. Now, Anika or Srikriti, can you tell me the guide word for this? O and slanting line. I don't remember for this one. Anyone quickly help her. Door. It's O, short O. Okay. Yeah, the word is correct, but you have to say it in a short. How do you say it? Door. Dur. Oh, dur. Or Correct. Dur. Okay, so the guide word is dur. Now you have to read this in the similar fashion. ko. Ko, correct. Ko is mountain. Then Mo. mo, correct. Focus. Focus, correct. Focus. Thokus, Potus. potus, correct. Votus. Votus, very good. Now we have conjuncts. Karuna ma'am, do you want me to take it right up to the end of this page? इसको पूरा करो. हाँ. ठीक है. रिवीजन है, रिवीजन you do. Huh. Now we have conjuncts. Conjuncts are where, like in Hindi, we have two sounds coming together. We many times we join people who are doing Hindi, they can understand it. Looking at the examples like here in Jerd. I don't have a mouse pointer, so the second, or I'll take it to the top line. Jerd. In here, we have the and y together. In Roman, we have Jerd, where D and I comes together to signify the sounds of D and Y, where the sound of Y is not complete. These two sounds are coming together. So that is why we have this superscript on D. So this is the revision for year. Here, B and in Hindi, B is half written and year is full written, and then N. So in English, it is B and E has a cap and N. So so you have to say this together. Bien. So can we have Manya to read this? So starting with the first one. Ben. Bien, yeah. Bien.
France. Yeah, correct. S has superscript, which means S has the sound of Y with it, combined. First, correct. Next one. I don't know how to say that one. Okay, Agastya, can you read it? E has the cap on top, which means that M and E has to be read together. I'm not sure how to do it either as well. Okay, Swikriti, can you try it? Manzur. Manzur, correct. Good. Manzur. M and E together. Me, M and E together. Zur. Okay, Agastya, can you read it now? Mienzur. Manzur. And Anika, can you read it? Mienzur. Menzur. M-E. It's like men. The same way as you have men in English. Menzur. Menju. Zur. 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 Menzur. Menju. Okay, read the last one now. Cesar. 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 It's not a long A. Cesar. Good. Now we have O. If O joins with some other letter, what happens? Then we have to say the short O. O has a cap on top. Or in Roman, or in Devanagari, we have half V and then V in the first word. The same way we have half K and V in the second word. Or in Roman, we have K and O with a cap. So these two letters are to be read together in one sound. First one is what. You can't hear two V's, but there is a sound with it. What. The same way, the second one is what. Okay. Swikriti, can you start reading them? What? Quat. Gondur. Gondur, correct. Sonder. Bon. Sundar. Bon, correct. This is a tricky bit, and I would like you all to try it. Can Agastya try it now? What? Wait, which one again? What? Yeah, the same one. Yeah. Okay. What? Yeah. What? Correct. Gondur. Gandur. D doesn't Gondur. have a dot underneath, so it is the, not the. Gondur. Gondur. Correct. Sonder. Sundar. Sonder. And Bon. Bon. Correct. Okay, let's move on. So there is a note underneath. You can read it when you have the PDF. It's just asking you to practice these words. Okay, Karuna aunty. अब ये है एक्सरसाइज है ये. हाँ. अब क्या है इसमें लगेंगे, मैं बता दूंगी पहले फिर पूछूंगी. पहले बता देंगे सब चीज को. सबसे पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड इज तारज. तारज. क्या लगेगा, र में क्या लगेगा या उसमें क्या लगेगा, और नीचे उसमें इंग्लिश में रोमन में तारज. नेक्स्ट वर्ड है करीब. क में लगेगा ऊपर. यहाँ र, पहले वाले वर्ड में र में लगेगा नीचे चंद्र, और करीब में लगेगा क में ऊपर चंद्र. नसीब. न में लगेगा चंद्र ऊपर. कमीन. न में लगेगा चंद्र नीचे. करेल. ल में लगेगा चंद्र नीचे. और कनी. कनी होता था कश्मीर में टॉप फ्लोर.
ये जो आ की मात्रा है उसके ऊपर चंद्र लगेगा और न में लगेगी बड़े ई की मात्रा कुनी। अब तुम अब इसमें जरा बता दो रोमन में क्या क्या कहाँ लगेगा अमीन। For the sound what do A. you use? Come on, you guys, you just did the revision. Taurus. T. Agastya, come on, great. No. I can tell you, after R, you have U and a cap on top. Now you have to tell me what comes after T. It's an exercise. Is it an A with a dash line from right to left? Yeah, correct. Kareeb. K. Again. A with a Is short. it- Yeah. And for what is for long sound of E? From left to right. Yeah. Naseeb. Now, Anika, you try. नसीब में क्या क्या लगेगा? Wait, try from which one? Naseeb, नसीब means fate. the third one. Same as Kareeb. Naseeb. And for a long E, what do you use? B के बाद I with a line slanting from left to right. Ka, for a short A, me, n. For a long E, you have I with the line slanting from left to right, and n. For n, you have U with a hat on top, right? Yeah. Ka, Karel. ka, R, Rel. A for a kare, a ka, you know, a with a short sound, a R, E, E with a line slanting from left to right, because it's a long sound. Kare, l. For short a, you have U with hat on top. Ka, ni, ka. It's ka, with the same as merge. Ka, K with A with two dots on top. Ni, E. E we write as I with a slanting line from left to right. अब हमको आगे बता देंगे इनको कि क्या क्या वर्ड है। ये लोग बाद में इनको एक्सरसाइज करनी होगी ना, तो अपने आप करेंगे, हम पढ़ के बताएंगे वर्ड्स। अब ये है नेक्स्ट वर्ड है बरुत। बरुत का मीनिंग है फुल। मधरेर, मधरेर उसका मतलब है शुगर। ये है रेह, रेह का मतलब है फ्लेम। ये है कोह, कोह मीन्स हिल। ये है सरी, सरी मीन्स ऑल। ये है फर्ज, फर्ज मीन्स ड्यूटी। तुम लोग को अपने आप पता चलेगा कहां पर जब तुम एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि तुम लोगों ने पुट किए हैं ये सब चीजें, तुम लोग को पता चल जाएगा कि कहां पर क्या लगेगा, क्योंकि यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। फिर है ये कोच, कोच होती है स्ट्रीट, कोच। ये है आंगुन, आंगुन, आंगुन होता है कंपाउंड। ये होता है, ये है वोब,
वो होता है वेंटिलेटर। वो ये होता है लच्छुल। लच्छुल होता है ब्रूम। ये होता है पोश। पोश होता है एनिमल। नेक्स्ट लाइन है फिर कॉल। कॉल होती है स्ट्रीम। हिंदी में क्यों आधा लिखा है, तो पूरा होना चाहिए था। ये भी कॉल एग्जिस्ट है ना, इसमें क्या ऐड करना है वो इनको देखना है। हाँ, बट ये क जैसे है ना, क यहाँ आधा नहीं होना चाहिए था, क होना चाहिए था पूरा। क के बाद लगेगी वो जो है ओ की उधर मात्रा। गैप होना चाहिए था। हाँ, गैप नहीं, गैप तो ठीक है लग जाएगा, लेकिन ओ की मात्रा जो करली वाली वो लगेगी, कॉल बन जाएगा। आता ऐसे वो लगा उन कॉल क अच्छा, ओड वो वो लगा उन कॉल। हाँ, तो बीच में एक जगह होनी चाहिए थी। हाँ, इसमें जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट। यहाँ सिर्फ शायद स्वीकृति है जो देवनागरी पढ़ती है। सो स्वीकृति के लिए है इसमें क आधा और बीच में कुछ लगेगा, फिर ल है। हाँ, वह लगेगा कॉल। फिर ये है दरियाव। दरियाव होता है रिवर। दरियाव। फिर है पोन। पोन न आधा और य पोन। पोन हो गया वाटर। कमीज हो गई शर्ट। ये है घर। अगर नीचे से लगेगा तो घर हो जाएगा, अगर ऊपर से चंद्र लग गया तो घर। घर होती है वॉच। ये है फिर पजाम। पानी पजाम। पजाम होते हैं ट्राउजर्स। ये होता है चौक। चौक होता है किचन। कलीन। कलीन होता है कारपेट। ये आप लोगों का है, एक मिनट, मेरा हार है, लो बैटरी आ रहा है, मुझे प्लग लगाना भूल गई। इसमें कुछ वर्ड्स रह गए, रुको रुको, थोड़ा पीछे करो, थोड़ा और करो, और करो। हाँ, मर्ज है आप लोगों का गाइड वर्ड इसमें, मर्ज। ये तो सबको पता होगा अब। और इसमें लास्ट वर्ड है बेने। बेने होती है सिस्टर। इसका मीनिंग यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ये वर्ड बेनी थोड़े होती शिफ्ट है हो गए राइट की तरफ। सिस्टर। अब तुम आगे बढ़ो, मेरे को 1 सेकंड का टाइम दे दो। हाँ ठीक है। किताब। किताब, it's multiple. One book is kitab. It's multiple books, so it is kitab. So the exercise for you is at your own pace and at your own leisure. You're going to fill in these blanks, all these. In the last part of the upper page, the top screen that you can see now, it has got conjuncts, the conjuncts that we saw here in the revision. So you refer to these conjuncts in order And to it will do help you in this doing the exercise. exercise. This exercise. After this, we go to this one, kitab. Yes. Bud, सबसे पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड इज किताब, हो गई बुक्स। ये है old man, bud. बुड, नॉट बुड, ये है बुड। बुड मीन्स ओल्ड। लॉकट या लॉकुट मीन्स स्मॉल। शेच, श में ऊपर से लगेगा और यहां पर बीच में शेच मीन्स मैसेज। पोच होता है गेस्ट। पोच। नेक्स्ट लाइन है बट। बट होता है फूड। कल होता है हेड। बान होते हैं यूटेंसिल्स। गिलास होते हैं चेरी। गिलास, एक गिलास होता है पानी पीने वाला, लेकिन कश्मीरी में चेरी को गिलास कहते हैं। गिलास। टूर होता है कोल्ड। टूर होता है कोल्ड।
जैसे हमने डबल चंद्र हिंदी में वाले देवनागरी में डबल चंद्र नीचे लगा, जो गाइड वर्ड है तूर, नॉट तुर, डबल चंद्र लग गया तूर। नेक्स्ट लाइन है पूंचिम, फिफ्थ होता है। नेक्स्ट दिस इज सेफ, सेफ होती है व्हाइट क्ले। ये होती है बक, बक होती है किडनीज। मिठाई, मिठाई हो गई स्वीट्स। टैनर, गन्स होता है टैनर। नेक्स्ट लाइन है मॉक, मॉक हो गया फेस। दर हो गया हार्ड। मूल हो गया रूट। वथर हो गया लीफ। जंग, जंग अगर होगा तो एक हो गया, अगर जंग है तो फिर लेग्स हैं दो, मोर देन वन। नेक्स्ट है गरीब, गरीब हो गया पोर। डोर हो गई विंडो। कोट हो गया नी। जंजीर हो गया हुक्का। और कुंड हो गया थॉर्न। नेक्स्ट लाइन है फिर गोट, होता है काइट। कर्सिड होता है मैसेंजर। आंगुन होता है कंपाउंड। अडीज होती है बोन। और असन होता है लाफ्टर। अब क्या है इसका काम, पीडीएफ ऑफ लेसन will also be posted on WhatsApp groups. Please take printouts and maintain a file and revive as and when you can. Try and use the learned words and sentences in your daily routine. If you have no one to talk with, talk to yourself in the mirror. फिर असाइनमेंट क्या है वो पढ़ लेना, क्या करना है, क्योंकि टाइम इज रनिंग आउट। आगे बढ़ो, इंपॉर्टेंट नोट भी है आगे। अब यही है क्या आज का काम? नहीं, अच्छा ये तो हाँ। रिविजन है। ओके ओके, चलो इन वर्ड्स को पढ़ के एक बार बताएं, नीचे वाली रिवीजन को पढ़ के बता देते हैं। आगे थोड़ा स्क्रॉल करो, ऊपर करो, स्क्रॉल करो। हाँ, जलकर, जलकर मीन्स डू फास्ट। वालिये, वालिये कम, यहाँ आओ, कम है। सुलिनेर, पढ़ के बस बताते हैं कि यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो द मीनिंग, ज्यादा हो जाएगा। काटिछुक, क्या गच्छी, साथ वुच, दाव त्राव, mekun wuch, Zoryar urs, they were 4 friends. Dan dit boz, be attentive. Akash nyul, sky is blue. 15 minutes gayi, 15 minutes have passed. Sorok chu hol hol pakan. Snake walks, hol hol means teda meda. Tyut kya gav, Tyut kya gav, how much is this? Tyut kya gav. Hupar kus drav, who went from that side? Sokul chvariyah dur, school is very far off. Zur makar, don't thief, don't steal. Turch setha, tur means sardi, turch setha, it is very cold. Kani pet khas, go on the top floor. Bon av gosan. Gosan means, translate meanu gosan means. इंडिया में जो आते हैं ना भिक्षुक, इसको भिक्षुक एक्चुअल वर्ड कह जो सकते भिक्षा हैं। मांगते हैं उसको बोलते हैं गोसाई। It's not beggars, they are Gosain. भिक्षु, those saints या जो normal जैसे बुद्धिस्ट monks होते हैं, they go from door to door to for food, so that is called gosain.
Saparch obur. It is overcast everywhere. Weingav gar gasun. It is now time to go home. थोड़ा सा और नीचे करो. आज का रिवीजन बड़ा इजी, मतलब मुश्किल नहीं. आज मेरे ख्याल से ये इनके लिए काफी ज्यादा हो जाता है. लेट्स गो बैक टू द टॉप एंड लेट चलो अस ठीक है. हाँ, मेक सम उसका सेंटेंसेस. तुम जरा बता दो, उसका वाला रोमन वाला जरा बता दो, बिकॉज आई एम नॉट होल वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट रोमन वन. अच्छा, और रोमन वन का बता दो कैसे क्या होगा. नीचे कर हाँ, दो और नीचे कर दो. इसमें नहीं उसको नीचे करो ना, और करो नीचे. रिवीजन के बाद वाला जो था उसको करो. अच्छा, ये वाले में. यस यहाँ से. हाँ मैं इसी का बोल रही थी. ये हाँ, थोड़ा हाँ. ज्यादा हो जाता है इनके लिए, क्योंकि अभी ये लोग सीख रहे हैं ना. तो हाँ, मेरे ख्याल से हम लोग अगर जितने वर्ड्स हमने किए हैं आज, अगर हम उन्हीं को थोड़ा ज्यादा करें. रिपीट रोमन फॉर रोमन्स जो रोमन हाँ, में पढ़ रहे हैं. इसमें से कुछ वर्ड्स हैं जो these words are commonly used, so I think that it's good that we know how to use these words in sentences, because you have already learned started making sentences in the previous lesson where we did those sentences, say kya chi now, things like that. There is one word here on the top line, tamiz. Let us make a sentence with this word tamiz. Tamiz means manners. So can you suggest, Anika, can you suggest a sentence using the word manners? I have manners. Okay, now let us see if we can say the same sentence in Kashmiri. I have manners. In place of I, so I'll use the word me. I'll not be using the word b here. The proper word in this sentence would be me. Have, in place of have, I'll use the word chu. And in place of manners, I'll use the word tamiz. Me chu tamiz. Or I have good manners. Me chu jan tamiz. So, Anika, can you repeat this sentence? Me chu jan tamiz. Mitch Jan tamiz. Yeah, good. I have a question. Is it butcher when you say I am? Yeah, bu chus. It depends on what is coming after I. If it is have, then I'll say me chu. I have. Okay. Yeah. If I say I am old, if I have to say I am old, I'm using am after I. In that case, I'll say bu chas bud, or a male would say bu chus bud. So it depends on what comes after I. Let's go to the leal. Okay, narrative. I guess it's not a difficult word. Swikriti, can you please give me a sentence with the word narrative, the leal? Like, Like a should I make story. one in Hindi? Kahani, I think. No, because दलील थोड़ा different हो जाता है, जैसे दलील पेश करना इस type का. So yes, you can use, instead of narrative, you can use the word story also, if you find it hard to use the word narrative. I wrote a story yesterday. या फिर मैंने कल एक कहानी लिखी. I think the word story doesn't fit here. Like if I go somewhere, अगर मैं कहीं जाती हूँ और वहाँ कुछ incident हो जाता है, तो मैं वो बताती हूँ. I just relate that incident. So I narrate that incident. That is what it is.
I'm a bit confused about this word. Okay, let's use a different word. This word myond. Myond is जैसे when we eat food, when we the food that we put in our mouth. Which line is like, It's the top line before the leaf. okay. Mute. Myot. Myot. Oh, okay. So, It's usually used for rice. Like we in our traditional homes, when we used to eat rice, we used to put a small ball of rice outside our plate. Hmm. Or when it's hard. Do you know that yeah, the yeah. ball of rice yeah, that is what is called myot. So can you make a sentence in Hindi? Hindi में ही sentence बना देना. अच्छा. So, खाना खाने से पहले मैंने बटरमिल्क बाहर निकाली. Before eating my food, I took out a milk. okay. Milk means which is held in hand. Exactly ये जो हमारी फिस्ट है इसके अंदर बराबर वो उसको म्यूट बोलते हैं. समझ आए? Okay. Okay. Cool. तो खाना खाने से पहले मैंने म्यूट निकाला. बत म्यूट चावल की म्यूट यानी बत मीन्स कश्मीरी में बत बोलते हैं राइस को. तो बत म्यूट. अच्छा, बट म्यूट निकाला. assessments. Method Batmit. Okay. Okay. दलील के लिए मैं सेंटेंस बताऊं कि हाँ जी. मैं कल कहीं गई थी तो मैंने घर आकर पूरी कल की पूरी दलील घर में बता दी. जैसे पूरा बता दिया. बस रात गमस कٲنٛسہِ हुंद घर यित वन में सारी दलील. इस तरह से एक्सप्लेन करके वर्ड को सेंटेंस में बोलते हैं. थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके हो जाता है. और कुछ पूछना है किसी वर्ड का सेंटेंस बताने में? आई कैन एक्सप्लेन. अभी दलील, हाँ दलील का ही अच्छा सेंटेंस है. मैं वन रात सारी दलील. मैं means I, वन means बोला. said, बोला. रात means yesterday. Sari means whole, everything. Sari dalil. I narrated whole thing, yesterday's whole thing. Katij. Now let's go to the second word in the same line. Katij. Katij is one bird that is found in Kashmir. मैं which Katij. I saw Katij. मैं which Katij. Us everybody knows mouth. Okay. I can think of a sentence. Can Manya think of a sentence? Us with mouth. I opened my mouth. I opened my mouth. So for I'll use me. Open is khulo. Myon, my, myon. Us. Me khulo panun us. I opened my mouth. Me khulo panun us. Can you repeat that sentence? Me khulo banun us. Correct. Any other word that you find interesting? We can make a sentence. स्वीकृति आप बताइए कोई वर्ड. जैसे ये बेडशीट है तो मैंने कल ही ये खरच बिछाई. हाँ. मैंने कल बेडशीट बिछाया. का रुच.
च है ये, करेक्ट। इसमें च होना चाहिए, ये छ नहीं है, च है। ഞാൻ tickets जो बिंदी हाँ, वाला मैं इसमें तो गलती है। कंफ्यूज के करछ ना बना करछ ना जो में बिंदी होनी चाहिए इसमें च, हाँ च में बिंदी I was होनी pronouncing with myself चाहिए। इसमें मेचुरात देख नो लेना, करच वथरोमुत मैंने हाँ, कल नई करच बिछाई है मेचुरात नो करच वहरोमुत इसमें I स्वीकृति have देख read a लेना, new carrots on yesterday. स्वीकृति इसमें देखना, देवनागरी में करच में छ नहीं है, इसमें च के नीचे बिंदी होनी चाहिए, ये करेक्शन। It should be ch, not ch, because we pronounce it carrots, not carrots. Carrots, ch. वेरी गुड। और किसी को कोई वर्ड, लास्ट वर्ड आज के लिए? बेनी में बनाओ बेनी। बेन्ने, बेन्ने, आई हैव अ सिस्टर। कोई ट्राई करेगा? आई की जगह पे मैं, छ। अब 2 वर्ड्स बचते हैं। मान्या ट्राई करो। मैं छ, फिल इन द ब्लैंक्स। मैं छ के बाद क्या आएगा? There would be something in between cha and ben, but I'm not sure हाँ, what would go in में between. छ आख बेनी। अब मैं बताऊंगी जैसे इंग्लिश में आता है ना इज, इसी तरह से कश्मीरी में आता है ये छ और छु। में छ आख बेनी, में हो गया मी मेरी, छ हो गया है, आख हो गया वन, बेनी हो गया बहन। Yeah. में छ आख बेनी। अगर मैं छु आख बॉय, तब अगर भाई है तो मैं छु आख बॉय, क्योंकि वो मेल है उसके साथ छु आएगा। मैं छ आख बेनी। चलो फिर आज है और कुछ, किसी को कुछ पूछना है? तो इसका हिंदी में कोई पैरेलल नहीं है? जैसे हिंदी में तो होता मेरी एक बहन है, तो हाँ, मतलब इसका हिंदी में ऐसा कोई पैरेलल है क्या? जैसे आई हैव, तो मैं छू, आई हैव अ सिस्टर। हिंदी के उससे अलग है ये थोड़ा, लाइक है और मेरी हिंदी का एक थोड़ा बहन अलग है, होता मेरी एक बहन है। है। What she is trying to say is I have kashir parchu tativan me ch, I is to direct gasan me to have is to gasan ch, but हिंदी में थोड़ा अलग हो जाता है। मेरी, मेरी थोड़ा अलग हो मेरी एक जाता है। बहन है, उसमें एक ही मेरी, बन जाता है मेरी। हाँ एक ही वर्ड, बट हिंदी में कोई डायरेक्ट वर्ड नहीं है, हिंदी में यही वर्ड आता है मेरी। एक बहन है तो सेम है, मेरी आता है उसमें थोड़ा डिफरेंट। और कुछ? तो एंड करें आज का लेसन फिर। और जो ये सेकंड एक्सरसाइज है दैट इज रियली टफ, जो इंसर्ट वॉवल्स वाला है, लाइक वी विल हैव टू रिमेंबर ऑल द वर्ड्स। आई विल ट्राई, मैं हेल्प करूंगी, मुझे पूछ, जिसको दिक्कत है मुझे पूछ लेना। आई विल, ये वाला बोल रहे हो आप? हाँ, लाइक इसमें हमें हाँ, हर एक ये है हाँ, डिफिकल्ट है ये। ये थोड़ा ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपको सोचने पे मजबूर करेगा ना, ये वर्ड्स मजबूर करेंगे, दे विल फोर्स यू टू थिंक कि कहाँ पे कौन सा आएगा। यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, यू विल नॉट गेट इट राइट, बट दैट इज द होल आइडिया। You will know it only when you try it. Just by doing the lessons one after the other, you are not going to be able to make words and sentences. Like even if you learn how to speak words, you will not know how to write them unless and until you try. Just try. Wherever you can't, we are there to help you. You can ask anything, you can ask. You send me the words on WhatsApp, personally भेजो मुझे, I can help you. ठीक है?
और हैप्पीली करो विद इंथुसिज्म, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं फोर्स करना कि आराम से सीखो, 10 बार पूछो, वी विल टेल आपका यू। चीट शीट रख देना साथ में, चीट शीट में ये सारे जो वॉवेल्स, एडिशनल वॉवेल्स हैं, कंजंक्ट्स हैं, ये सब हाँ, का उसको cheat देख करके आप बना के रखना। बिल्कुल ये बना लिखने पाओगे। के टाइम पे साइड में रखना, ये उससे काफी इजी बनेगा। वो चीट शीट में एक तो जो आपका लेटर होगा और उसके साथ का गाइड वर्ड, जैसे ये है, ये इसमें अ और आ है, इसके साथ एक इसका जो गाइड वर्ड होगा, पुराने लेसन्स निकाल के उसमें गाइड वर्ड भी देख लेना, उससे इजी हो जाएगा। अदरवाइज सिर्फ लेटर को देख के नहीं पता लगेगा कौन सा लेटर कहाँ पे आता है। ठीक है, ओके। ओके, चलो फिर लेसन एंड करते हैं आज का। सी यू नेक्स्ट वीक। लेकिन अब ये टाइम फिर से डिस्कस करना पड़ेगा एक बार कि ये वाला टाइम चाहिए या पुराना टाइम जो था वही ठीक है, क्योंकि जिन लोगों के लिए टाइम चेंज किया था वो तो आए नहीं आज भी। ठीक है, चलो सी यू नेक्स्ट वीक देन, बाय। Thank you. Thank चलिए you. स्टॉप रिकॉर्डिंग। थैंक यू। ओके, चलो फिर ओके, और कुछ डिस्चार्ज गीत गच्छान में फोन ते गच्छान